Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Constitution Why and How, and under this chapter is also included, which is your second last chapter in the book. है So now this Constitution as a living document, you are supposed to read some of the content of this chapter under the first chapter, that is Constitution Why and How. ठीक है, तो इसमें we have discussed about Article 368. We have discussed about the process of amending the constitution. The first process was any which is not very important provision of the constitution can be amended by the simple majority of both the houses. Okay, and then the next point we have seen some important provisions of the constitution can be amended by the simple majority of the both the houses separately plus two-third majority of all present and voting. And we have discussed up to now, and now today we will discuss in some detail the third process of the amendment of the constitution, that is ratification by states. Okay, so we have discussed about in a brief. Now we will see that some articles of the constitution, if we want to amend those special important articles of the constitution, then in that case a special majority is not sufficient. Okay, and there is any amendment which aims to bring changes in the provisions related to the distribution of power between the center and the state government, or the provisions related to representation of the people. It is important that if we want to make changes in such important provisions, then the state must be consulted. Okay, and they must give their consent. Then only these changes can be applied. And because we are a federal country, our constitution is a federal constitution. It divides power between the center and the state. The state government is not subordinate to the center, but both the state government and the central government are the source of power for both the central and the state government is the constitution only. So the constitution has ensured that by providing that legislature of half the states have to pass the amendment bill before the amendment comes into effect. Okay, any provision which any amendment which wants to change the distribution of power, then in that case the legislatures of half the state must pass that amendment bill. Then only that amendment can come into effect. So we see that it was the opinion of our constitution makers that in order to amend some parts of the constitution, greater or we can say wider consensus in the polity is expected. Then only those changes can be brought. So this this is the thing which respect the states, the authority of the states, and gives them participation in the process of amendment. It's not that the central government can do anything, it can bring any change in the constitution. If the change is going to affect the status of the states, the powers of the state, then the states must be consulted and they must give their consent in order to become effective of those provisions. So we can say that for some parts of the constitution this kind of consensus is required, or at the same time our constitution makers has taken care that this procedure should be somehow flexible. Though it is showing some kind of rigidity, because after passing from both the houses by simple majority and special majority, it will go to the state legislature. Still it seems to be rigid, है ना, बहुत rigid लग रहा है, लेकिन
इसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो एलिमेंट has been put in, and that is the consent of only half the states is required, and that too, that consent will be given by simple majority, that is 51%. Two-third majority is not required of the state legislature. So this is again an element of flexibility is added to the constitution. So in this way we are seeing, as we have I told you earlier also, our constitution is a mix of rigidity and flexibility. Okay, so by this after passing from both the houses by simple majority and special majority, this the provision of the amendment of the constitution will go to the state legislature, and if half of the state legislature pass it by simple majority, then it will be amended. Okay, so this process is not something which is impracticable, though we see that the conditions are rigid, but still it is not key, it cannot be done, it's not like that. Okay, so this, in this way we can say that the Constitution of India can be amended through large scale consensus, and yes, participation of states are there, but it is very limited. It is not for each and every provision. Only for some important provisions the participation of a state is ensured. Okay, and the founding fathers of the Indian Constitution, they have taken care that Constitution should not be open to easy tampering. It should not be too much flexible. If it can be tampered very easily, then what we find that the whole constitution can be changed within 10 or 15 years, है ना? But it should not be tampered easily, but at the same time the future generation were given the right to amend and modify the constitution according to the need of the time, according to the requirement of the time. So this is very beautiful balance between the two. And now we will directly come to the this portion of your book in which it is given that the basic structure, है ना, basic structure and evolution of the constitution. This is very much important for you. Okay, so ये आपको भी समझना है, and this basic structure, this concept of basic structure will again be there in that chapter fundamental rights. Okay, तो अभी आप इसको समझ लीजिए क्या है basic structure and evolution of the how basic structure has helped Indian Constitution to evolve. So what is basic structure? The concept of basic structure. And how it evolved the Indian Constitution. Okay, what we find that this theory of basic structure of the constitution has become a very important part of the constitution, though it is not written in the constitution. Basic structure is not given in the constitution. It is only through judicial we can say judgment that this concept of basic structure has come, and the judgment was in the case of that case Vanand Bharti versus state of Kerala का जो केस हुआ था, उसी में ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था. सो द केस इज, यू मस्ट रिमेंबर द नेम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. केशवानंद भारती. The judgment came in the year 1973. So here in this regard, you must understand what was the judgment. First of all, we will
discuss the judgment, then whatever is required I will discuss. So what was the judgment? The judgment was that according to this judgment, what were the implications of the judgment, what were the consequences of the judgment. अगर हम एसेंस में देखें तो इस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट था. सबसे पहली चीज़ तो ये, इस जजमेंट के कारण क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर था, दैट वाज put to some limitation. It means that the parliament has no power to amend the constitution in an unlimited manner. It means that the constituent power of the parliament is limited. It's not absolute power that the parliament has the authority to amend any part of the constitution. No, it's not like that. There are some limitations on the power of the parliament to amend the constitution. है ना? There cannot be any amendment by the parliament which violates the basic structure of the constitution. Okay, it means that the constitution has some basic structure, and these basic structures should not be violated by the parliament in amending the constitution. You can amend the constitution, okay. The parliament is given the power to amend the constitution. This power is given to the parliament by article 368 in the constitution itself, that's fine. But the parliament has no power to amend. The parliament has some limitations on this power to amend the constitution. And what are these limitations? The limitation is this basic structure. The parliament cannot amend the constitution in such a way that it violates the basic structure of the constitution. Okay. And within this limitation, the parliament can amend any and all parts of the constitution. Okay. And according to this judgment, what happened, that it was the judgment that placed the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates basic structure or not, and what constitute the basic structure. That is the most important thing. So here you must understand that the year is 1973. Around this time there was a conflict. There was a conflict between the parliament on the one hand and the judiciary on the other hand. The conflict was regarding supremacy. Who is supreme? Parliament supreme है या judiciary supreme है? ठीक है? तो ये जो supremacy की लड़ाई हो रही थी, this conflict, this fight came to an end with this judgment of Keswan and Bharti, in which the judiciary said that no, the parliament cannot amend any part of the constitution, because earlier the parliament has make some amendments, and through amendment it was said that the parliament can change any part of the constitution, any part. But now this judgment came in which it is said that the parliament cannot change the base and cannot make such changes which violates the basic structure of the constitution. And who will decide? Who will decide that the parliament is violating the basic structure of the constitution? It will be decided by the Supreme Court. It will be decided by the judiciary. So who is supreme? So judiciary. So ये जो फाइट चल रहा था ना कि मैं सुप्रीम हूँ, उधर ये हो रहा है कि नहीं, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट सच कि द जुडिशरी वाज नॉट कि मैं सुप्रीम. जुडिशरी का जो हम कह सकते हैं जो जजमेंट है, एक्चुअली इट प्रूव्स दैट नीदर द पार्लियामेंट, नो ऑर्गन ऑफ द government is supreme. Who is supreme? Constitution is supreme. And who made the constitution? The constitution is being made by the representatives of the people. So who is supreme? People are the supreme authority. In a democracy, people are the supreme authority. So this was actually importance. This was actually implication of this judgment कि इसने ये कह दिया कि पार्लियामेंट जो है वो वायलेट नहीं कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड who will decide कि parliament is violating the basic structure or not violating the basic structure? It will be decided by the by the judiciary,
है ना. And moreover, the most important thing, what is basic structure of the Indian Constitution? Because this term is not anywhere mentioned in the Constitution. कहीं भी नहीं है Constitution में इस basic structure का judgment. तो ये कौन decide करेगा कि क्या basic structure में आता है और क्या basic structure में नहीं आता है? So the judgment of the Supreme Court was in this case was that it will be decided by the judiciary only. कि कौन सा part of the constitution, which part of the constitution constitute the basic structure. Okay, तो ये जो ruling है ये एक बहुत ही important ruling है in the evolution of the constitution, because हमारे constitution में जो चीज़ नहीं दी गई, बाद में जो situation, ये problem जो आई थी ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? अगर हम इसका origin देखते हैं तो इसका origin है abolition of जमींदारी एक्ट. अभी ये सब चीज़ें आप फिर से पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स में, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ बताएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प. स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू, इन बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं. उसको फिर से हम लोग फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर करेंगे तो हम लोग उसको फिर से डिस्कस करेंगे. हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? हमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, है ना, कि हमें प्रॉपर्टी अर्न करने का, एक्वायर करने का राइट है. बट बाद में क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और पार्ट है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना. तो ये दोनों जो फंडामेंटल राइट्स एक तरफ किसको दिए गए? इंडिविजुअल्स को. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या था कि स्टेट इज गोइंग टू फॉर्मुलेट एनी पॉलिसी. सो व्हेन द स्टेट इज फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसी, इट शुड follow some guidelines, and these guidelines are mentioned in this directive principles of state policy, as I told you earlier also. ठीक है. अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें जितने भी डायरेक्शंस दिए गए हैं वो गवर्नमेंट को दिया गया है ना. इन ऑर्डर टू फॉर्म द पॉलिसी, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी, यू शुड फॉलो दीज गाइडलाइंस. दीज आर ओनली गाइडलाइंस. ओके. The government cannot be compelled legally or constitutionally to follow these guidelines. ठीक है. गवर्नमेंट को आप कंपेल नहीं कर सकते हो कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो ही करने हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया है, खुद ही लिख दिया है कि ओनली द गवर्नमेंट इज, वी कैन से गवर्नमेंट इज एडवाइज्ड, गवर्नमेंट इज सजेस्टेड to follow these guidelines. It is not compulsory on the part of the government, it is not mandatory on the part of the government to follow these guidelines. ये नहीं कि लीगली हम उसको क्लेम कर सकते हैं कि जुडिशरी में जाके that the government is not following directive principles of a state policy or any policy which is made by the government is against this directive principle of state policy. ये हम नहीं कर सकते. ठीक है. अब दूसरी तरफ हमें फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया लोगों को, पीपल को. वी वर गिवन फंडामेंटल राइट्स इन विच राइट टू प्रॉपर्टी वाज देयर. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसमें एक लास्ट वाला राइट किया आपने पीछे के क्लासेस में पढ़ा है, यू हैव एन आइडिया, है ना. हम लोगों को कुछ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और ये अभी हमने जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस कर रहे थे तो लिमिटेशंस में भी हमने इसको डिस्कस किया था. तो यू आर हैविंग एन आइडिया अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. इसमें एक जो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ है फंडामेंटल राइट्स के साथ कि इफ़ एनीवन, be it anyone, the state government or the central government or any private organization or anyone, any individual or group of people, if anyone is violating our fundamental rights, then we can go directly in to the judiciary. So these fundamental rights are legally enforceable, है ना. लेकिन जो directive principles of state policy, they are not legally enforceable, they are not constitutionally enforceable. ठीक है. अब what happened actually when the constitution implemented, we were having this right to property, and now in the year 1951 the government abolished zamindari. This law was made, abolition of Zamindari Act 1951. So what happened that it was claimed in the judiciary that the government, this act of abolition of Zamindari was actually against the right to property, because the constitution is giving us right to property, then
जमींदारी शुड ऑल्सो नॉट बी अबॉलिस्ड, है ना। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। ऑन द वन हैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग अस राइट टू property, and on the other hand the government, by following the directive principle of state policy, has abolished right to has abolished this जमींदारी abolition, has abolished जमींदारी, है ना। क्यों जमींदारी अबॉलिश किया? बिकॉज जमींदारी प्रथा जो थी हमारी कंट्री में, दैट वाज कॉजिंग वेरी लार्ज इनइक्वालिटीज बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, है ना। कुछ एक लोग हैं जो जिनके पास पूरे का पूरा गांव है, एक गांव, दो गांव, तीन गांव के जमींदार हैं, वो पूरी की पूरी ज़मीन उनकी, एंड अदर पीपल आर दे आर लैंडलेस। तो दिस वाज कॉजिंग डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, है ना। तो इस कारण से इसको हटाया गया। और जो मेन जिसको हम कहेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, इट वाज because of this Zamindari Abolition Act, because of this right to property. So in this fight, what we find that the parliament was with directive principle of state policy, and the judiciary was with the fundamental rights of the people. ठीक है। So the fight was, इसको आई विल राइट डाउन, आई विल इस तरह से आप एक चार्ट के फॉर्म में देखेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिटेन ऑल दीज थिंग्स, है ना। एक तरफ है हमारे फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तरफ है ठीक है। अब इन दोनों में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? बिकॉज दिस फंडामेंटल राइट हमें दे रहा है क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है कि there should not be unequal distribution of resources, natural resources like land, and because of this directive of the state, that the state should formulate such policy which should reduce the unequal distribution of land resources, the government has made this law, abolition of zamindari, है ना। ठीक है। ओके, नाउ दिस जमींदारी एबोलिशन एक्ट was made by the parliament, okay, and इसको कौन सपोर्ट दे रहा है? ये पूरा जो इस तरफ अगर हम देखें, ऑन दिस साइड हु इज देयर, parliament, and our constitution has made the judiciary as the custodian of fundamental rights, फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक। कस्टोडियन मीन्स उसको सुरक्षा देने वाला। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमें कोर्ट है जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो इधर पार्लियामेंट है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, और उसको इम्पोर्टेंस देते हुए उसने जमींदारी एबोलिशन एक्ट लाया। और इस तरफ हमारा क्या आ जाता है, जुडिशरी, है ना। ओके, तो ये जो जुडिशरी है, it is there to protect the fundamental rights of the people, and parliament is there to follow the directive principle of the state policy, and because of this there was conflict। और इसी conflict के अंदर काफ़ी चीज़ें हुई, जिसमें एक सबसे मेजर डेवलपमेंट हम ये कहेंगे ये हुआ कि पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक ऐसा अमेंडमेंट पास किया जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
जिसकी लीगैलिटी पर क्वेश्चन उठा, और उसमें ही ये 1973 का केशवानंद भारती का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि द पार्लियामेंट कैन नॉट change the directive principles of cannot change the basic structure of the constitution. Okay, so this is all about basic structure. अगर ये लड़ाई जो चल रही थी, इस लड़ाई में अगर हम देखें तो who is the winner? The winner is not judiciary, the winner is the constitution, the winner is the people of the country, है ना. तो उसके बाद आगे और भी डेवलपमेंट्स होते हैं जो अभी आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ये केशवानंद भारती के मैटर में हमारी जुडिशरी ने ये भी कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी डज नॉट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अकॉर्डिंगली 44th अमेंडमेंट से बेसिक ये राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया. नाउ वी आर नॉट हैविंग दिस राइट टू प्रॉपर्टी, नाउ इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू लीगल राइट्स. अब ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया, अब ये हमारा लीगल राइट्स बन गया. ठीक है, तो ये दिस इज़ द कंट्रोवर्सी जिसके इसके पीछे जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी. अब हम देखेंगे कि ये जो वर्डिक्ट है केशवानंद भारती का, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ. सो अगर पीछे के हम 73 का ये जजमेंट है, कितने साल हो गए अगर हम देखें तो इट्स 30 + 20, इट्स अराउंड 50 years वी कैन सी, लेस देन समहाउ लेस देन, थोड़ा कम है 50 years से, अराउंड 50 years बीत चुके हैं. और ये जो डिसीजन था केशवानंद भारती का, actually it is governing all interpretation of the constitution, and all institutions in the country have accepted this theory of basic structure. इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने तो लिखा नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, आप कैसे कह सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है. नहीं, ये कभी भी चैलेंज नहीं किया गया, हर किसी ने इस जजमेंट को एक्सेप्ट किया. और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से ये आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बन गया आज के समय में, एक्चुअली it is an example of a living constitution. It shows that how our constitution is growing, how it is responding to the environment, how is it responding to the changed circumstances, changed times. This is the quality of a living thing ना. एक बहुत ही important feature living thing का होता है कि हम respond करते हैं, जो भी हमारे अराउंड चेंजेस होते हैं उससे रिस्पॉन्ड करते हैं. दिस इज द फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड एज लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है. ये नहीं कि ये एक डेड डॉक्यूमेंट है जो एक बार लिख दिया हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस था बस वी आर फॉलोइंग दैट. नो, अ न्यू कॉन्सेप्ट हैज इमर्ज्ड, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो अपने चारों तरफ होने वाले बदलाव की तरफ वो करता है, प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्ड करता है ना. तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारा इंटरप्रिटेशन किया केशवानंद भारती के केस में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को अपहोल्ड किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना दिया, है ना. और जिस तरीके से जो सिचुएशंस में जो हमने अभी डिस्कस किया, ये बता रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे बाय डे इट इज़ ग्रोइंग, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ इट्स बीइंग इफेक्टिव इवन आफ्टर 70 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन. इट इज़ एज respectful today as it used to be in the 1950s or 60s. So from here the authority comes to the constitution. इस तरह से constitution की authority जो है वो बनती है ना. And what we find that since 1973 the court has in many cases elaborated upon this theory of basic structure and given instances of what constitute the basic structure of the Constitution of India, है ना. So this basic structure doctrine has actually, we can say, it has further consolidated the balance between the rigidity and the flexibility, है ना. जब हम कह रहे हैं कि हमारा Constitution it's a balance, it's a mix of rigidity and flexibility, so this concept of basic structure has actually consolidated that balance, because now we have certain parts in the constitution now after 1973
there are some parts in the constitution which cannot be amended, है ना. So it shows the rigidity of the constitution, but because there are some parts which cannot be amended, it shows rigidity, है ना. बाकी सारे पार्ट में आप अमेंडमेंट ला सकते हो, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते हो. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. We will continue with this discussion in the next class.